Hello, good morning. Welcome back to our next video. Now we're going to study the detail about the nomenclatures. You remember that in last video we discussed about the basic elements of the taxonomy. Nomenclatures is one of them. Okay? Nomenclatures, that means naming. That means we're going to provide the name to the particular organisms. Okay, so there is a two way to give a names, basically in word use. One is the vernacular names. This is the names which given by the local peoples in their local language. Okay, this is the vernacular names. But there is a lots of drawback regarding that vernacular names. Like the local peoples are not going to provide the name to the each and every individuals in their local language. Basically there is some limits. Okay, and another drawback of that naming is this name is not going to be utilized universally. Okay, in the scientific communications. ओके, साइंटिफिक कम्युनिकेशंस में इसको अच्छे से यूज नहीं हो सकता है, नहीं करते हैं साइंटिस्ट. So there is a lack of regarding these names for that कि कैसे ये काम नहीं करता है. Here I am take the examples of the rose, not rosa, that's a rose. This is one known flowers. I hope all you know about that rose. In Hindi we say gulab to that rose. In Bengali we say them gulab. And in Tamil, that same rose is known as a rosapa. So there is a communications gap. So Bengali cannot understand that what is the rosapa. And even in Assamese, I think you also use these words gulab. Okay, so you are not going to differentiate it with the rosapa. So there is this communications gap. That's why these kind of that nomenclature is not universally. Okay, so they are not utilized, but still they are very famous in the local places, and the local people is still using that ones. Okay, only the limit is that is not utilized the scientific communities. Okay, come to the scientific naming. Scientific namings. This is the scientific naming. Scientific name, definitely this name is going to provided by someone of the biologist, and it is based on the agreed rule and that certain criteria. Okay, and this name is also inversely applicable. That means this is utilized by the whole scientific communities. Okay, जितने भी scientific communities हैं, scientists हैं, ये इसी नाम को यूज करते हैं. ठीक है. In that scientific namings, there is a two type of naming. Basically, there's lots of the type of names, but here we're going to discuss about only the two type of the namings. One is the binomial, binomial nomenclatures, and that's the trinomial nomenclatures. In which the binomial nomenclature is very famous. This will be given by the Carolus Linnaeus. Okay, and the trinomial nomenclatures, this is also famous. This is given by the Lamarck. Okay, now go to the details ones. The first we're going to study about the binomial nomenclatures. Binomial nomenclatures. This is the binomial nomenclatures. Just here I summarize the historical backgrounds, historical aspects of that categories, historical aspects of that categories. Okay, the one by one we're going to understand. This is the contributions, like the proposal, principles and uses. This is the scientists which give that proposals or principles, and in which book they publish this proposal and principles, and where in which years this got published. Okay, so all the points are very important with respect to your NEET examinations. Okay, be careful to remember these things. Okay, in NCERT just only given the Linnaeus, but they are not mentioning the book name or that the times. Here I am going to deal that once. Okay, first is the proposals. The proposal for the binomial nomenclatures, first of all given by the Caspar Boheen. Caspar Boheen in his book Pinax, P-I-N-A-X, Pinax, in the year of the 1673. Next,
The principle for the binomial nomenclatures, this was proposed by, this was given by, principles is given by the Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, okay, in his book the Philosophia Botanica in year the 1751, okay. That means this is the first time someone provide the rule and regulations regarding the nomenclatures. This is the binomial nomenclatures. The credit goes to the Carolus Linnaeus, okay. But in this book Philosophia Botanica, they not mention any names. The first uses of this book, these principles is applied by the same scientist, that means Carolus Linnaeus. In first uses, the Carolus Linnaeus in his book the Species Palentora. This book is only based on the plant naming, and this book also considered as a first valid. This book is also considered as a first valid publications for plant. That means in this book Carolus Linnaeus first times utilized the name for the plants in year 1753, and in this book he also give the name of 5,900 plant species. कितना 5,900 प्लांट स्पीसीज का नाम भी दिया गया है इसी बुक में, ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड यूजेस. इन द second time uses, same scientist the Carolus Linnaeus published a book named the Systema Natura, okay. Systema Natura, that means the second time they're going to use the principles of the nomenclatures, okay, in the year of the 1758. This book for the किसके लिए था? This book for the animals, okay, animals. And this book also considered as a first valid publication for the animals, first publications for the animals. And in this book he also mentioned the 4,326 animal species. कितना 4,326 animal species का इसमें नाम लिखा था उसमें, ठीक है. तो this is the all about the historical aspects of the binomial nomenclatures. Okay, now come to the rules of the binomial nomenclatures. Rules for the binomial nomenclatures. Okay, before going to the rules of the binomial nomenclatures, here the very important things. All the principle and procedures regarding the nomenclatures which given by the Linnaeus, these all the rules standardized, or we can say that all the rules are modified as a codes. किससे modified हो गया? Codes में modified हो गया, ठीक है. Codes में modified कर दिया गया इसमें. After that standardizations of the Linnaeus rules for the nomenclatures, there is a total 5 codes for the standardizations of the names. These codes are as follows. Okay, write all these codes in your notebook. Especially in the NCERT, none of the code is mentioned, but in your package which provided by our institute, these names all are given. If you go through this package, then you find that all the names. Okay, no problem. These codes are, just write in your notebook. The first one is the plant. Okay, for the plant. The plants के लिए कोड था ICBN. This stands for the International
कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर्स। ओके, क्या था ये तुम्हारा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर्स। ठीक है। द सेकेंड कोड इज फॉर द कल्टिवेटेड प्लांट्स। The code is ICNCP. ICNCP. This is the stand for the International Code for Nomenclatures of the Cultivated Plants. Cultivated plants. Another codes for the animals. This is the ICZB. Write yourself on your notebook. Just I am going to mention that once. ICZB. This is the International Code for Zoological Nomenclatures. ठीक है, Zoological Nomenclatures. ठीक है, Zoological Nomenclatures. This is the mistakes. ICN. This is the N. Okay, correct this ones. International Code for Zoological Nomenclatures. Okay, ICZN. This is the ICZN. Okay, just write to yourself. Next code for the bacteria. The next code for the bacteria. This is the ICNB. ICNB. This is the International Codes for Nomenclature of Bacteria. I will repeat that once. International Code for Nomenclatures of Bacteria. Okay, and then last one is the for the viruses. ICTV. क्या है ये? ICTV. Okay, ICTV. This stands for the International Committees for the Taxonomy of Virus. Taxonomy of virus. International committees for the taxonomy of virus. These all the 5 codes are very important with respect to your examinations. So please remember all these codes. Okay, now come to the next points. हाँ, क्या बोला था मैंने? Rules for the binomial nomenclatures. तो Linnaeus in their book Philosophica Botanica, he mentioned about 76 rules. Okay, 76 rules. Okay, for the nomenclature of that animals and plants. Okay, no problem. Next, come to the what's their rules. Here we are not going to discuss all the 76 rules. We are going to only some special points, some important points in these rules. Okay, in the binomial nomenclatures there are just 2 components. क्या होता है इसमें? There is 2 components. Okay, this is the first component and this is the second components. क्या हो गया ये तुम्हारा? ये है तुम्हारा first components. ये क्या हो गया तुम्हारा? This is the first component and this is the second components. ठीक है? Okay, just I am writing the short. The first components represent the generic names. क्या represent करता है? Generic name. That means genus of that organisms. And the second components represent the species epithet. The species epithet. Okay. When we are writing these names, so be careful during the writings. The first things. Okay, first of all understand that key whatever I am saying here, these all are the rule. Okay, I'm saying that ऐसे हम नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे क्या है? रूल्स में है, तो उन्हीं चीज को मैं बोल रहा हूँ। इसमें 2 कंपोनेंट्स होता है, पहला जेनरिक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पेसिस एपिथेट्स को रिप्रेजेंट करता है। Whenever we going to write the generic name, this is started from the capital letters. फर्स्ट लेटर कैसा होता है तुम्हारा? ये कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैपिटल्स। एंड द सेकेंड, दैट मीन्स स्पेसिस एपिथेट्स, दिस विल बी स्मॉलर। क्या होना चाहिए? स्मॉल कैप्स होना चाहिए इसमें, स्मॉल कैप्स होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, ये स्मॉल कैप्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बोथ आर
both the generic name as well as the specific name underlined separately. क्या होना चाहिए? underlined separately. हम इनको क्या करेंगे? underline करेंगे. separately underlines करना पड़ेगा इसमें. ठीक है? okay. if we handwritten, if we putting this in handwriting, then we must underline separately. But during the when we take the printout of these from the computers and printers, तो we are not going to underline this. We are going to just italize. क्या करना है इसमें? अगर प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करेंगे, तो अगर प्रिंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम उसको इटैलिसाइज करना पड़ेगा हमें इसको. ठीक है? प्रिंटेड मीडिया में. ठीक है? The word limit regarding the namings, word limits. ठीक है? word limits. word limits में यहाँ पे maximum we going to use the 12 letter. ठीक है? and minimum we going to use the free ones. okay? मतलब जेनरिक या स्पेसिस में से कोई भी लिख रहे हैं तो उसमें मिनिमम लेटर कितना होना चाहिए? 3. मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए इसमें. ठीक है? नेक्स्ट वन. At the end of that binomial nomenclatures, just we going to write the author name also. क्या करना है हमें? author names लिखना है. But there is certain rules regarding the when we putting the author's names. Okay, क्या author names के लिए है इसमें? जब भी author's names लिखेंगे, ठीक है? author names लिखेंगे तो author names के end में, ठीक है? मैं sorry. After the naming of the binomial case, this is the name of the Indian mangoes, Mangifera indica. Okay, this Mangifera indica is name given by the Linnaeus. So for the representation of that author at the last ones, we're going to put it in the abbreviated forms, not the full names. Just we're going to write it in abbreviated forms. एबरवेटेड फॉर्म्स में हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना होगा. जैसे कि LINN. दिस इज फॉर द लीनियस. ठीक है? लीनियस. नॉट गोइंग टू राइट द फुल नेम्स, जस्ट अ लीनियस. और दिस ऑथर नेम्स नेवर अंडरलाइंस, नेवर इटलाइज्ड. और ये हमें किसमें? रोमन लेटर में लिखना होता है इसमें. ठीक है ना? इटलाइज भी नहीं करना है, इटलाइसाइज भी नहीं करना है, हमें इसको रोमन में जैसे कि वैसे लिखना है. ना को इसको अंडरलाइन भी नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है? दैट्स नॉट गोइंग टू बी अंडरलाइंस. So these are the rules. स्पेशली हमको ये पता होना चाहिए जितना भी है. जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हमें उसमें क्या करना है? जैसे ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका. तो मैंगीफेरा इंडिका में एक हो गया जेनेरिक नेम. द जेनेरिक नेम इज मैंगीफेरा एंड स्पेसिस एपिथेट्स दिस इज द इंडिका. ओके. और दिस नेम इज गिवन बाय द लीनियस. तो फॉर द लीनियस ऑथर नेम्स इज LINN. जस्ट एबरवेटेड फॉर्म में लिखेंगे इसमें. ठीक है ना? बोथ द जेनेरिक एंड एज वेल एज द स्पेसिफिक एपिथेट्स को क्या करना है? हमें सेपरेटली अंडरलाइंस करना होता है. बट अगर हम प्रिंट अगर ले रहे हैं, प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, तो उसे क्या करेंगे? इटैलिसाइज करना पड़ेगा. ठीक है? और वर्ड देयर इज अ वर्ड लिमिट्स. ठीक है ना? जैसे कि मैक्सिमम 12 एंड मिनिमम 13 लेटर्स हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे. ठीक है? नाउ कम टू द अनदर रूल्स. दिस इज ऑल्सो द रूल्स. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रायोरिटीज. प्रिंसिपल ऑफ द प्रायोरिटीज. ओके, दिख रहा है इसमें? ओके. The principle of the priorities. This is the another rules. Like एक फंगस लिया है. इस फंगस का 2 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. Albigo candida and Crispus candida. Albigo candida and Crispus candida. What is this? The rule or principle of priorities say that कि among or between these 2 names, okay, the which one is given periods, this is considered as a correct name. तो इसमें जो albigo candida है, this is given periods, that's why they are selected as a correct name. Understands? And that's simultaneously this another one is the this is considered as a synonyms, but this is the incorrect name. Just we use it as a synonyms के लिए तौर पे हम इसको क्या करेंगे? यूज कर लेते हैं हम लोग. ठीक है? Now this is all about the binomial nomenclatures. ठीक है ना? This is all about the binomial nomenclature. Now come to the trinomial nomenclatures. Just I previously said that कि this nomenclature is given by the Lamarck. ठीक है? Lamarck ने इसको दिया था.
In the trinomial nomenclatures, there is a 3 components: the first, second, and third components. The first components, like a binomial nomenclature, represent the generic names. The second name, like the binomial nomenclatures, represent the species epithet. Here there is a new things. The third components represent the subspecies if we are considering animals. Okay, and if we are going to consider a plant, then the third component represent the varieties. किसको represents करेगा? varieties को represents करता है. उसी तरह से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो थर्ड कंपोनेंट्स किसको represents करता है? ये strain strains को represents करता है. किसको represent करता है? strains को represent करता है. for the bacteria के लिए, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम स्ट्रेन्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो दैट मीन्स इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर्स देयर इज 3 कंपोनेंट्स. कितने हो गए? 3 कंपोनेंट्स हो गए इसमें. जेनेरिक, स्पेसिस एंड सब स्पेसिस और वेराइटीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है. फॉर द एग्जांपल्स ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, आई एम टेक द 3 नेम्स: इंडियन क्रो, गोरिल्लास एंड कैबेज. दीज आर द 2 एनिमल्स एंड द लास्ट वन इज द प्लांट्स. The name of Indian crow is Crowus splendanus splendanus. Crowus splendanus and splendanus. ठीक है ना. रूल जैसा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एकदम सेम उसी तरह से लिखना है. जीनस का कैपिटल और स्पेसिस एंड सब स्पेसिस दैट स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल लेटर्स. And these all the 3 components are underlined separately when we handwrittens. Okay, handwrittens. ठीक है ना. गोरिल्ला का नाम हो गया इसमें. जेनेरिक नेम इज द गोरिल्ला, स्पेसिस नेम इज ऑल्सो गोरिल्लास एंड सब स्पेसिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द गोरिल्ला. तो गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्लास. ओके. इंडियन क्रोज में क्या था तुम्हारा? जेनेरिक नेम क्रोवस, स्पेसिस नेम स्प्लेंडेनिस, बट द सब स्पेसिस नेम इज द सेम. क्या था इसमें भी? स्प्लेंडेनिस था इसमें. नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल्स, कैबेज. द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैबेज इज ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाट. Brassica oleracea capitat. The 3 name is given. The first one, that means Brassica, represent the generic names. Oleracea, the second one, that represent the species epithets of the cabbage, and the last one is the capitat. This is the third names, third components which represent the varieties, because these are the plant. For the plants, the third component represent the तुम्हारा varieties को represents करता है. Okay. यहाँ पे मैंने जो 3 नाम लिखा उसके बेसिस पे देयर इज अ 3 टर्मिनोलॉजी एंड आई होप कि तुम्हें ये याद भी रखना पड़ेगा. ठीक है ना. दिस इज मस्ट फॉर यू कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये तीनों नाम से. तीनों चीज क्या है? दैट इज अ 3 टर्मिनोलॉजी. ओके. द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ऑटोनेम. ऑटोनेम, AUTONYM. ऑटोनेम्स. ऑटोनेम्स रिप्रेजेंट द इफ द स्पेसिस एंड सब स्पेसिस या वैराइटीज विल बी द सेम. समझ रहे हो? अगर दोनों में सेम है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑटोनिम्स यूज करते हैं. ठीक है. टॉटोनिम्स. टॉटोनिम्स में क्या होगा? अगर जेनेरिक नेम्स और सब स्पेसिस नेम्स, स्पेसिस एपिथेट विल बी द सेम, देन दिस शो द ऑटोनिम्स को शो करता है इसमें. ठीक है. लाइक स्पेसिस एंड सब स्पेसिस. देखो इसमें किसमें सेम था? स्पेसिस और सब स्पेसिस. इन द केस ऑफ इंडियन क्रो एंड गोरिल्लास, दोनों में क्या था? ये दोनों में सेम था. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटोनिम्स. स्पेशली इंडियन क्रो में क्या था? स्पेसिस एंड सब स्पेसिस दोनों क्या थे? सेम थे. दैट मीन्स द नेम ऑफ द क्रोज रिप्रेजेंट द ऑटोनिम्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. कीप वन मोर थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन द माइंड. दिस इज वैलिड फॉर किसके लिए है? ये ओनली वैलिड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब बॉटनी और जूलॉजी के नाम के लिए वैलिड होता है. प्लांट्स के नेम्स एंड एनिमल्स के नेम के लिए वैलिड होता है. ठीक है. द सेकेंड है टॉटोनिम्स. तो टॉटोनिम्स में क्या बोला मैंने? जेनेरिक नेम्स और स्पेसिस नेम दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे गोरिल्लास मैंने लिखा है. ठीक है ना. यहाँ पे भी तुम्हें याद रखना है. दिस इज ओनली वैलिड फॉर किसके लिए होता है? दिस इज ओनली वैलिड फॉर
जूलॉजी, जूलॉजिकल नेम्स, ठीक है ना, जूलॉजिकल नेम के लिए वैलिड होता है. दिस इज नॉट वैलिड फॉर द बॉटेनिकल नेम्स के लिए वैलिड नहीं होगा इसमें, ठीक है. द सेकेंड नेक्स्ट वन इज द, ये है तुम्हारा होमोनेम. तो होमोनेम के केसेस में क्या है तुम्हारा, होमोनेम्स one name for the two organism. If we going to use the same name for the two organism, then they represent the homonems को represents करता है इसमें, ठीक है ना, homonems को represents करता है यहाँ पे, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हम ले लेते हैं इसमें, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, प्लांट्स का नाम है तुम्हारा प्रूनस ड्यूलिसी, प्रूनस ड्यूलिसी, ठीक है ना. द सेम नेम इज गिवन फॉर द आलमंड एंड प्लम्स. दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम नेम को यूज करते हैं इसमें, ठीक है. बट when we going to consider that binomial nomenclatures rule regulations, so this is only valid for the almonds. So that means we need a new name for the plums. So we're going to change the prunus dulicis को change कर देंगे हम किसमें, that we're going to change it as a prunus domestica. प्रूनस डोमेस्टिका में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे इसमें, ठीक है. ओके, आई एम गोइंग टू चेंज दैट वंस. दिस इज ऑल अबाउट द बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स. आई होप you like this video, and in next video we are going to discuss about the taxonomic hierarchies. Thank you.